friends and welcome to Radio Manav Rachna 107.8 FM. मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर कार्यक्रम है एक खास मुलाकात। खास मुलाकात खास शख्सियत के साथ और आज की हमारी खास मुलाकात है डॉक्टर गीता टेकचंद के साथ। ये एक बहुत ही जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट है, एक्स चीफ फिजियोथेरेपिस्ट और एचओडी हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम, इसी के साथ साथ सर गंगा राम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली एंड सीताराम भारतीय हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। आज इनका स्वागत करेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में। A hearty welcome to you, ma'am. Thank you so much, Bhavna. Ma'am, the first question. You've chosen to be a physiotherapist. Did you choose this? Was it trusted? And how has been the journey? I wanted to make money. Wow. So I joined the commercial course, Okay. worked with commercial units. Then somebody influenced me. Wow. This was an American surgeon, a diplomat's wife who came to India. She said, you know, you're wasting your head and hands. Oh, wow. You should get into medicine or psychiatry, physical therapy. So, that Yes. dropped the penny. And I came home, told my parents, I quit. Wow. So, I'm going to join medicine, pre-med. So my father said, anything but medicine. Okay. So I went on strike. I stopped eating. That was wonderful. It must have been way back years. Way back. So this is 68 or something. My God. And so my mother said, he's testing you. I was the youngest, so he didn't want me to get lost in this big, wicked world. Okay. So I got my grandfather to sign my papers and joined physical therapy. That itself was a long story. I qualified. Wow. And then started a journey from 1972 to it's not stopped. Yes. I'm passionate about it, wholly, totally, from deep within. And I bless the person who made that penny drop, Yes. and I never looked back. She's gone. She's gone to Mr. God. Yes. But I'm here Yes. carrying on with her legacy. So beautiful a story. I mean, I had never thought that somebody could give you such an inspiration that your life could change. I mean, I really don't think Dr. Geeta Tekchand would have taken some other profession and I would have been interviewing her like this had she not been a physiotherapist today of such a repute. So definitely it makes a difference. और बहुत अच्छा लगा मैम जिस ढंग से आपने कहा, न जाने कब जिंदगी में कौन आपके लिए एक मसीहा बनकर आता है और वो मसीहा आपकी जिंदगी बदल देता है। चलिए, अब ये तो बात रही वे बैक इन 1970s इन्होंने चूज किया कि इन्हें एक फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, लेकिन तब की फिजियोथेरेपी और आज की फिजियोथेरेपी क्या लगता है काफी जमाने भर का डिफरेंस हो गया है? See, there was the black and white cinema. Yes. Then it transferred further. Today it's the age of your phone, the internet, and color. Yes. So I come from an era of black and white, but I developed it passionately. And along with it, my music, my art, Wow. my dancing, my That's theatre, very nice. all these were areas which interested me, and it has helped with physical therapy because the person you treat is not just a flesh and bones Yes. person. He or she is a thinking being Yes. with a background to so much more. Yes. So I'm blessed, extremely blessed. बहुत ही खूबसूरत सी जर्नी, लेकिन साथ के साथ इस जर्नी में आने वाले उतार चढ़ाव उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अब हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम फिजियोथेरेपी की बात करें, एक जमाना था फिजियोथेरेपी यूज्ड टू बी कंसिडर्ड ओनली एज अ रिहैबिलिटेशन और आई थिंक एन एडेड एडवांटेज विद एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, बट आज फिजियोथेरेपी बदल गई है। मतलब मुझे लगता है आज से अगर मैं 20 साल पहले की बात करूं तो कोई फिजियोथेरेपिस्ट के पास ऐसे नहीं जाता था जैसे आज फिजियोथेरेपिस्ट आपको जाते हैं, विजिट करते हैं और आप
कैजुअली उनके पास जा सकते हैं एंड यू कैन टॉक अबाउट पेन देयर. अर्लियर ये होता था डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करेगा तो ही आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे. सो क्या आप लोगों के लिए उस समय में काफी चैलेंजेबल होता था या हॉस्पिटल्स यूज्ड टू बी द ओनली करियर एट दैट टाइम? You know, I was always a fighter. Okay. So when the orthopedician or the neurologist or the physician referred patients with a prescription, I would go chasing down to them and say, why did you write this? Oh wow. I have to assess for myself and treat. So they knew this girl means a different story. Yes. And also there was this orthopedic surgeon, I'm not naming names. Yes. He came in his gown all upside down. Geeta, give me shortwave diathermy, fix my back. I can't stand straight. I'm in pain, intense pain. Yes. So I said, sir, do you want me to fix you or do you want me to give you what you're asking for? So he said, do whatever. Yes. I'm in a lot of pain. So I put him flat on his back. All I used was my hands, Yes. little hot pack, etc. You know, God gives you a lot of energy through a hotline. Yes. So be humble with what you do, but sincere. That fellow stood up straight. Thank you. I didn't know this was physical therapy. Yes. See, till, I beg your pardon, the clinical world, most of them don't even know Yes. what physical therapy is. It's Yes. not just electrotherapy or XYZ. It's a lot to do with assessing and the cheer and the positivity which your Yes. hands can give. Yes. No machine can do what you can do from your heart. Yes. So very true. मतलब क्या आपने सोचा था आपके हाथों में वो जादू है कि आप किसी को ठीक कर सकते हैं? जरूरी नहीं. आज के टाइम में क्या होता है ना, जब एक फिजियोथेरेपिस्ट आता है सो हमारा सारा एम्फेसिस क्या रहता है, अरे ये तो हाथों से कुछ करके चला गया. Can I interrupt you? Yes. You know, I've carried this label with me all these years. The girl with the magic hands. Wow. So I've told God, I look up and say, Suna, keep the magic flowing. Yes. So very true. So actually yes, ये जो मैजिक है ना ये आपके हाथों में ही हो सकता है. और मैं उन सभी लोगों को जरूर कहना चाहूंगी जो लोग जब कभी भी फिजियोथेरेपी या फिजिकल थेरेपी की मदद लेते हैं तो उनका सारा एम्फेसिस रहता है ये कोई मशीन ही नहीं लगा रहे हैं. मैंने बहुत सी बार लोगों को ये असेस करते हुए देखा है कि व्हेन अ फिजियोथेरेपिस्ट वॉक्स इन दे आर एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ मशीन्स. वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है. मैडम ये तो सिर्फ हाथों से कुछ करके चले गए, दैट मीन्स इन्होंने कुछ किया नहीं. तो ये पैसे किस बात के? फॉर ऑल दोज पीपल हु थिंक ये मैजिक आपके हाथों में ही है. चलिए अब बात करते हैं करंट सिनेरियो की. आज के जमाने में प्रिवेंशन एंड रिहैबिलिटेशन दोनों के लिए उतना ही एम्फेसिस है. इनफैक्ट आज के टाइम में तो वी गो ऑन अ विजिट टू अ फिजियोथेरेपिस्ट क्योंकि हमें लगता है हमारा पोस्चर कई बार खराब हो रहा है. 9 to 5 बहुत ही अनकरेक्टेड और बहुत ही स्पॉइल्ड लाइफस्टाइल जिस प्रकार से हम जीते हैं, तो हमें लगता है आई थिंक ही कैन गाइड अस बेटर. सो लगता है ये जमाना ज्यादा बेटर है. So beautifully put. This is modern age syndrome. Yes. Modern age की supposed amenities है, comforts है. हम लोग especially in a home scenario उंगली भी नहीं उठाना चाहते हैं to do any work. We are slouched on a sofa, watch television. Mind is just not at peace. Yes. So we carry so much stress in our body and the mind, and that's where awareness comes. Awareness as to how to sit with grace. Yes. Carry yourself royally. Yes. नेक में पेन हो गया है, पेन हो गया तो फिर बैठता कैसे? Exactly. सीधा हो, get up, get off your butt and move. Yes. तो घर है, घर का सिनारियो मेरा ओपिनियन में सबसे बड़ा जिम है. आप थोड़ी तो काम करो घर में, तो वो हम करते नहीं. We want domestic help. So that's where rehab तो already आपके पास है.
बिल्कुल। Do not shy away from this. Do not shy away from getting back to your roots. That's important. और ये जो रिहैबिलिटेशन है या फिर जो जिम है, ये मैन एंड वुमेन दोनों के लिए है. सो व्हेन डॉक्टर गीता सेज that your home is your gym, that doesn't mean that now all the women start doing the work, and of course men will enjoy the gym that is there outside. No. It is for, I think, both of them. Absolutely. So yes, of course, ये जो फिजिकल थेरेपी है, अगर जो बात मैंने कही थी कि पहले, आज से 20-22 साल पहले हम इसके बारे में कम जानते थे, ये हॉस्पिटल्स तक सीमित थी, और आज ये हमारे घरों के अंदर है, उसका एकमात्र कारण है हमारा बदलता और बिगड़ता हुआ लाइफस्टाइल. जिस ढंग से हमने अपने आप को ऐशो आराम का पुतला बना लिया. आई मीन फैंस रिमोट से चलते हैं, घर रिमोट से चलता है, हमारे घर के दरवाजे तक रिमोट से चलते हैं, और हम प्रेफर करते हैं, बड़ी ही शान से हम ये कहते हैं हमारे घर में सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम है, हमें यहाँ उंगली हिलाने की भी जरूरत नहीं है, एट अ प्रेस ऑफ अ बटन हमारे घर का काम हो जाता है. बट देन यू रियलाइज कि भगवान ने हमारे शरीर को एक मशीन की तरह बनाया है, विच हैज टू वर्क. और अगर आप इसे काम पर नहीं लगाएंगे तो जिस प्रकार रखी हुई गाड़ी खराब हो जाती है, रखा हुआ दिमाग खराब होने लगता है, वैसे ही यूं ही रखा हुआ शरीर खराब होने लगता है. और तब हम किनके पास जाते हैं? हम जाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास. डॉक्टर गीता एक बहुत ही जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट है, साथ में शी इज अ लवली पर्सन. डॉक्टर गीता, मुझे बताइए, एज अ वुमेन डिड यू फेस चैलेंजेस? क्योंकि हर करियर के फॉर वुमेन अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं, गुड्स एंड बैड्स भी होते हैं. सो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, डिड यू फील एनी चैलेंजेस दैट वुमेन कुड फेस? As I said earlier, I'm a fighter. Yes. And I made my mark through my work. So when you can work sincerely, passionately, I think nothing comes in the way. Even God said, you have a free hand. Yes. Go ahead. So awareness create करना तो सबसे बड़ी चीज है. In rehab जो आप बोलते हैं, rehab create that mark of awareness in everybody. Yes. With or without a problem. So it becomes preventive health. Yes. Not just therapeutics. Yes. So अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, आज के हमारे जितने भी स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं, दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन देयर फिजियोथेरेपिस्ट फॉर द ओनली रीजन कि उनका बहुत ही रिगरस काम होता है. और जब आप किसी भी चीज को बहुत रिगरसली यूज करते हैं तो आपको भी पता है उसकी मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, और वो मेंटेनेंस करने में सिर्फ और सिर्फ हमारा साथ देते हैं ये फिजियोथेरेपिस्ट. सो अगर आपके आसपास कोई फिजियोथेरेपिस्ट है तो सबसे पहले प्लीज कंसिडर देम इक्वली एज डॉक्टर्स. एंड सेकेंड जरूरी चीज कि हम उन्हें भी उतना ही रिस्पेक्ट करें, क्योंकि उनके हाथों में भी जादू है और साथ के साथ उनके पास कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो हमारे लाइफ को बदल सकते हैं. सो कुछ टिप्स मैं जरूर चाहूंगी कि आप हमें दें, बिकॉज आज के टाइम में जिस प्रकार से हम सभी का लाइफस्टाइल हो गया है, सो वी आर एक्चुअली सिटिंग अ लॉट. So, Bhavna, I treat and I ask all physios to treat the mind, Yes. the body, the spirit. So I don't treat a person from the physical level only. It's the mind. They come with so much of baggage. Yes. Cleanse that. So the mind, body, remind them of the soul that is alive within them. We're like walking sleepwalkers, dead. तो अभी से ये स्थिति है तो 5 साल, 10 साल, 20 साल क्या करोगे? So create that mind, body, spirit contribution to health. Then you don't need anything. You are treating yourself. एग्जैक्टली. आई मीन एक टाइम है जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंड कर रहे हैं, हम रोबोट्स क्रिएट कर रहे हैं, एंड वी आर बोस्टिंग अबाउट इट. वी आर वेरी हैप्पी कि अब आने वाले समय में भूल जाइए, अगर आपकी काम वाली छुट्टी लेती है तो रोबोट्स आ जाएंगे, वो सारे घर का काम बटन पर करेंगे और नाराज भी नहीं होंगे, छुट्टी मांगेंगे नहीं, तो आपको तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा. बट डू वी रियलाइज व्हाट एग्जैक्टली आर वी मेकिंग ऑफ आवरसेल्व्स? So I do tell my patients this: the day your domestic takes leave, prasad bato. Say, oh, thank Yes. God. Today I have to roll up my sleeves and Yes. do something, not just sit back and get somebody else to run my home. यस. सो चाहे फिर वो डोमेस्टिक हेल्प है या फिर आपके वो सारे ऑड वर्क्स हैं जो एक्चुअली पहले हम करते थे, आई थिंक आपकी फिजियोथेरेपी वहीं हो जाती है जहां आप अपने आप पर काम करना शुरू कर देते हैं, एंड कॉन्शियसली.
not unconsciously. आपको किस चीज की जरूरत है ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है. And the end of the day, this whole body in itself is the place where you are living. हम घरों को चकाचक करते हैं बट बॉडी को और माइंड को कभी क्लेंस नहीं करते. So right. सो अगर आप इसको, अपने सिस्टम को, अपनी धारणाओं को, इन सब चीजों को बदल लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपनी लाइफ को बदल लिया है. अब एक बहुत अहम चीज, जिस प्रकार से मैं टिप्स की बात कर रही थी कि भाई जब कभी भी आपके पास पेशेंट्स आते हैं एंड यू आर एक्चुअली राइट, दे कम विद अ बैगेज, और अदर आई शुड से दे कम विद अ प्री नोशन दैट when they are coming to you, you are only physically treating them. And that is also very important to know कि जब वो इस प्रकार से सोच कर आते हैं तो उनको बदलना मुश्किल होता है. मान लीजिए कि आप किसी को कहती हैं डेली 10 एक्सरसाइज करनी है, फॉर दैट मैटर चाहे किसी को आर्थराइटिस है या फिर किसी को कोई न्यूरो की प्रॉब्लम है, व्हाटएवर, आप रिहैबिलिटेशन के लिए आप उन्हें 10 एक्सरसाइज बताते हैं लेकिन वो 5 ही करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बाकी सारा काम तो कोई मशीन से आप कर ही देंगी. एट द एंड ऑफ द डे आप डॉक्टर हैं, आप चार्ज भी कर रही हैं, सो यू विल ट्राई टू ट्रीट थिंग्स. हाउ डू यू tell them, how do you convince them it is important that they do all this, otherwise life is very difficult? Health or one's own self, there's no shortcut. Yes. There's no shortcut. You can't buy some dal and panko it. Yes. You have to wash it, clean it, cook it, chonko it. Yes. तब वो दाल कहलाए. बिल्कुल. So the body has to be educated. आपको क्या है? So at least personally, I sit and talk to a patient, listen to them, because it's my view after almost 50 years of Yes. professionalism that जो आपके शरीर में हो रहा है, चल रहा है, that's a manifestation of your mind. Yes. अगर कंधा पे तकलीफ है, you are shouldering something. Yes. Let go. देखो कितनी जल्दी ठीक होगा. Exactly. If your knee or your back, किस चीज ने आपका बैक तोड़ दिया? Yes. Ask yourself. So I do tend to talk to them, ask them a little about their background, like you have been asking Yes. me. And they come out with so much. And exercise I can explain to them in 5 minutes, and they can even Google search. Yes. कोई ठीक नहीं हुआ उससे. But बिल्कुल. you have somebody there to listen to Yes. you and guide you accordingly, but not necessarily with the lecture, but suggestions. Yes. And it makes them think. Full circle, they'll come back to you and say, oh, you had the magic. Yes. So I think we really need to own it up. ये Yes. रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है और हम जब तक ये जिम्मेदारियां दूसरों पर डालते रहेंगे कि भाई हमारा शरीर, हम बिजी बहुत है, सो आई थिंक दैट विल नॉट मेक अ डिफरेंस. एंड एट द एंड ऑफ द डे एक चीज कही जाती है, इट्स ऑल इन योर माइंड. वो वाकई सच है. और आज तो इस चीज पर एक बहुत अच्छी स्टैंप लगा दिया डॉक्टर गीता टेकचंद ने. उन्होंने कहा है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो इमेजिन करिए कि ये क्यों हो रहा है, एंड डेफिनेटली उसका आंसर आपको मिल जाएगा. तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी डॉक्टर गीता. लेकिन जाने से पहले एक बहुत खास मैसेज और आपकी ये बात. आजकल people are talking about meditation. यस. मेडिटेशन में तो बैठे हैं, आंख भी बंद है, क्रॉस लेग भी है, पर दिमाग तो शॉपिंग लिस्ट कर रहा है. उसने मुझे क्यों कहा, क्यों नहीं कहा Yes. की बात चल रहा है दिमाग. तो मेडिटेशन मत करो. बिल्कुल. Don't fool yourself. Get on with it. So every waking moment is meditation. यस. Be aware. If you're aware, you won't sit wrong. Ergonomics is taken Yes. care. If you move around a little, that is your physicality. No, I have to do 10,000 steps. ऐसे नहीं होता. जी. You need to be aware. So meditation is moment by moment. Surrender to God. And one beautiful message for all our listeners. I
don't know what else to add to what I've already said, but love yourself enough to take care of yourself, because nobody can take care of you. Nobody. That's a wonderful message, and I think most of the doctors don't give you this message that love yourself, because nobody else will come and take care of you. They will probably say, we'll take care of you. I think this was a wonderful conversation. Thank you so very much, Dr. Geeta. It was wonderful having you here. Thank you. दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे, जुड़े रहेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ. फील गुड, फील लाइव.